દીવમાં પ્રીએમસી ઘોઘલા સરકારી ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલનો વાર્ષિક ઉત્સવ ભવ્ય રીતે યોજાયો. દીવના મલાલા ઓડિટોરિયમ ખાતે પીએમ શ્રી ઘોઘલા સરકારી ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ ખાતે યોજાયેલ વાર્ષિક ઉત્સવમાં દીપ પ્રાગટ્ય બાદ શાળાના આચાર્ય આરતી મોડાસિયા દ્વારા મુખ્ય મહેમાનોનું શાબ્દિક અને પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત બાદ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ થયો, જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ જ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું. ત્યારબાદ વર્ષ દરમિયાન શાળા દ્વારા કરવામાં આવેલ વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં બેસ્ટ પરફોર્મન્સ કરનાર વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોનું મુખ્ય મહેમાનોના હસ્તે ઇનામો આપી સન્માનિત કરાયા. ત્યારબાદ શાળાનો વાર્ષિક અહેવાલ શિક્ષિકા કનિષ્કાબેન ચૌહાણે રજૂ કર્યો. મલાલા ખાતે યોજાયેલ આ વાર્ષિક ઉત્સવને મુખ્ય મહેમાનોએ પ્રશંસા કરી. આ પ્રસંગે ડેપ્યુટી કલેક્ટર શિવમ મિશ્રા સાહેબે ભવિષ્યમાં વિદ્યાર્થીઓ ઉજ્જવળ કારકિર્દી બનાવવા માટેનું મહત્વનું માર્ગદર્શન આપ્યું. I would like to Good morning, everyone. It is my great honor and privilege to extend a warm welcome to all of you on this special occasion of PM Sri GPS English Medium Ghoghla's annual function. First, I extend a warm welcome DMC President Sri Hareshbhai Pacha sir, whose leadership and guidance always encourage us. We are also privileged to have with us Deputy Collector Sir, Sri Shivam Mishra Sir, who always support educational progress. Welcome, sir. A heartfelt welcome to Srimati Karuna Ben Solanki, DMC Vice President. Welcome, ma'am. We also extend our gratitude to Vipul Bhai Solanki, Councillor of DMC, come SMC Vice Chairman. I also take this opportunity to welcome Piyush Maru sir, who strength of promoting quality education. I also welcome Silvasa's Diet Lecturer Sri Rohit Sharma sir. Welcome, sir. I also welcome Mansingh sir from Samudra Shiksha. We are honored to have with us SMC Chairman Sri Yatinbhai Jetwa and SMC retired teacher Junnata sir, who have always encouraged and support us. A sincere thanks to media for their presence. All the parents, your trust and cooperation. To our teachers, dear students, you are the heart of this occasion. Your efforts make everything worthwhile. Once again, I welcome you all and thank you for being a part of this memorable occasion. Thank you so much. मोबाइल वाला बंदर जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो, और ये बंदर आप सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है. सही कहा ना? Now here, first rank goes to Soumani from 5th standard. Rank goes to Tanvi Amit. Deputy Collector 2/3. And Sri Vipul Lap for Aarti Thali competition. First rank goes Prem Ram Sahan. Now I would like Praise Kumar Sulan sir from Silvassa to Neerav to Henry Rajesh now from third stand. I request all the now third prize goes. They have done really well in this. Chawda Tika. Sit up. Third
dedication. From the sixth, please clap. Standard goes to Surya Piyush push-ups. Standard. Please come on the standard. So please come up. Come the third rank. So please come to the end of this wonderful. द्रौपदी दांव पर लगा दी गई। कुरुवंश की वो कुलवधू उस दिन रोई नहीं, अपने केश खोलकर एक घायल सिंहनी की तरह दहाड़ उठी। सौगंध ली द्रौपदी ने, अब मेरे केश पानी से नहीं धुले जाएंगे, उस रक्त से धुलेंगे जो मेरे पति मेरे अपराधी दुशासन की छाती फाड़ के लाएंगे। Morning to all the students present here. First of all, I would like to thank DMC President Sir Shri Haresh Bhai, DMC Vice President Madam Karuna Ben, DMC Councillor, SMC Chairman Vipul Bhai ji, and most importantly the education team led by Piyush Maru ji, Principal Aarti Modhasia Madam, and all the staff present here for this wonderful performance. And I would like everybody to have a round of applause. सभी लोग ताली बजाएंगे जो आज स्टूडेंट्स ने प्रस्तुति दी है उसके लिए। यहाँ पे पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और जितने बच्चों ने आज प्राइज जीता है, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम and wish them best of luck for their future, because these are our next generation. And as the slogan given by our honorable Prime Minister साहब of विकसित भारत, जो विकसित भारत का सपना है 2047 में बनाने का, वो उनकी नींव यही बच्चे हैं जो आगे चल के 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ आगे ले जाएंगे। तो मैं आज इस माध्यम से आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि they are focusing not only on their studies, but through this annual function they are focusing on cultural activities, starting from the tiny tots performance of the KG children to the Mahabharata dance that we just saw. It was brilliantly presented, brilliantly choreographed, and I would like to thank the teachers who have worked behind the scenes to train the students. It shows the dedication and discipline that they have gone on to, starting from the choreography, the timing, the costumes. सभी चीज़ों पे बारीकी से ध्यान दिया गया है, और ये चीज़ें बच्चों को आगे चल के किसी ना किसी फील्ड में जब भी वो अपना करियर बनाएंगे वो सुदृढ़ करेंगी। एंड दीज आर आवर स्टूडेंट्स हु विल गो ऑन टू गिव दी बोर्ड एग्जाम्स एज वेल, सो इट विल हेल्प देम in giving their papers as well, because these students will be the first students who will give their class 10 board exams in DU. और आप सभी को बताने में ये खुशी भी मुझे हो रही है कि DU में इस साल पहली बार CBSE बोर्ड से 10वीं कक्षा के जो बच्चे देंगे वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, एंड दे विल बी अपीयरिंग इन CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस इन इंग्लिश मीडियम्स. So these students in future they will appear in the 10th and 12th board exams in the English medium CBSE school, and in future also जो नए स्कूल बनने वाले हैं उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो CBSE एफिलिएशन हो. तो सभी पेरेंट्स, सभी टीचर्स से मेरा यही अनुरोध है कि प्लीज़ encourage your students. आपके जो बच्चे हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रोत्साहित कीजिए. वो किसी भी फील्ड में अच्छे हो सकते हैं. हो सकता है एजुकेशन में यदि वो ठीक ना हो तो आगे चल के कक्षा 8वीं 9वीं में बच्चे अपनी एजुकेशन भी समझने लग जाते हैं कि किस चीज़ में उनकी रुचि है, किस चीज़ में नहीं है. यदि वो एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छे हैं तो उनको उसमें बढ़ावा दिया जाए. आज की डेट में हमारे यूटी में अलग अलग प्रकार के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है. यदि बच्चों का डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो वो निफ्ट में जा सकते हैं. यदि बच्चों का इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. सो इट इज़ नॉट जस्ट वन फील्ड जैसे पहले होता था कि 15-20 साल पहले बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेंगे. आज हमारी यूटी में ही, संघ प्रदेश में ही ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ बच्चे जा सकते हैं. उसके अलावा भी बच्चों को एक्सपोजर मिल सकता है भारत की विभिन्न संस्थाओं द्वारा. तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आई वुड वंस अगेन लाइक टू थैंक द इंटायर एजुकेशन ऑफिस टीम, द प्रीएम श्री गवर्नमेंट झांसी की रानी स्कूल, and the teachers who have very well performed in this function, and another round of applause for the students who have come here in large numbers and their parents who have supported them throughout this journey. Thank you.